all know from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 23rd November, that is Thursday, and we are here with the Hindu analysis of Thursday. So let's start with important articles. Here is the article talking about workers in 𝗟𝗏𝗀𝗃 tunnel closer to freedom. So this is a positive news for us. We hope that they will come out soon. The next is 2 army captains, 2 soldiers killed in Rajouri operation. So these 2 articles we will be discussing. First, I hope you are aware, 𝗟𝗏𝗀𝗃 is actually a place in Uttarakhand, okay, where actually road construction or tunnel construction was happening. What is the name of the tunnel, guys? Tunnel ka naam bataiye. Okay. And which organization is constructing that tunnel? Okay, please tell me. Okay, so this tunnel was being constructed, and because of some landslides and other reasons, the 41 workers got trapped inside it since 12th November. So it's almost 11 days. And I hope you are aware. But yes, the right answer is 𝗟𝗏𝗃𝗏 tunnel. This is the name of the tunnel that is being talked about. Okay, 𝗟𝗏𝗃𝗏 tunnel. ठीक है, याद रखिएगा नाम. So that is what they are doing it. So the some drilling has been done and all. NDRF personnel is also engaging in rescue operations and all. Yes, very good. This is 𝗟𝗏𝗃𝗏 tunnel. And I hope you are aware, this is Mr. Arnold Dix. He is actually a very expert in tunneling and all. He has been called from Australia and all. So he said, looking very positive, a global tunneling expert joins Uttarakhand rescue operation. So we hope that yes, things will be positive. Okay, so just have an idea, keep on watching it. देखो इस सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. SJVNL is being talked about. Then another thing is NHIDCL. So this is National Highway करके कुछ है. This is an organization which is constructing roads, highways and all. So after the class is over, read about SJVNL and NHIDCL. ये दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. Okay, is it clear? So go and read about it. Now the next one is 2 army captains, 2 soldiers killed in Rajouri operation. So actually, I hope you are aware, Rajouri is, you will find it in 𝗏 Valley in Jammu and Kashmir. So this is the Union Territory of Jammu and Kashmir Union Territory, and here you will find 𝗏 range. Okay, ये वाला जो है ना mountain range. So this is 𝗏 range, and this is of course the part of Himalayan range and all. So that is what is being talked about. Okay. The next one is there was a recent G20 virtual summit. We have told you that in September the G20 summit happened in India. I hope you are aware. I mean, the physical summit happened at Bharat Mandapam. Bharat Mandapam, you will find it where? You will find it in New Delhi. Now, what happened was they decided that in November they will be doing a virtual summit of G20 as well. Okay. So this, since we are in November, so the G20 summit virtually happened, where PM Modi said that there should be zero tolerance towards terrorism and killing of innocent. So basically, killing of innocent unacceptable. That is what he has said, and this is in context of Israel-Hamas conflict and all. Okay. Now you can see, go to their original website of G20, and it's talking about it. In pursuance of this announcement, a virtual G20 leaders summit chaired by PM Modi was held yesterday. 22nd November is yesterday. Okay, leaders of all G20 summits include chair of African Union, 9 guest countries, heads of 11 international organizations were also invited. Okay, because African Union is going to join very soon, है ना? So G21 हो जाएगा, फिर हो सकता है most likely. So these are the things you should be knowing about it. For second Voice of Global Summit, Voice of Global South Summit हुई थी 17th November 2023 को. So these are the things you should be knowing it, है ना? Then actually we are passing on this to the Brazilian. So mean in 2024 the Brazil will get the presidency of G20, है ना? So Brazilian G20 presidency is also being talked about here. Okay, yes. So let's move on further, है ना? So अब क्या हुआ था, कल एक और थे, तो G20 summit हुई थी, इसमें बात हुई Israel Hamas से related. Then BRICS special summit was invited. So South Africa is actually this year the host of BRICS summit. So they invited again an online conference, a special conference regarding the Israel Hamas conflict and all. In fact, South Africa has withdrawn the ambassador.
I hope you are aware, we had discussed it yesterday. Ambassador from Israel, this was in the news and all. So they hosted it. In fact, the BRICS may 6 new nations is going to join on January 1st, January 2024. So they were also invited. Saudi Arabia, Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE. These are the 6 new BRICS nations. So they have also been invited, where actually from India's side, the Prime Minister did not attend it, but the Foreign Minister, EA, matlab External Affairs Minister. External Affairs Minister. So External Affairs Ministers means nothing but Foreign Minister. Okay? Minister as Shankar to attend instead. So that was also in the news yesterday and all. So these are the things. Okay, first page where there was another article talking about after 2 months, India resumes e-visa services for Canadian citizen as situation improves. I hope you are aware, especially just after G20 summit and all, there have been we have seen some decline in India-Canada relations. आपने देखा होगा, है ना? Many of the actually diplomats were asked to leave and all. So we have seen some decline in the relationship between India and Canada, the diplomatic relations, especially after the September G20 summit and all. But recently we have seen, very recently, that after 2 months, India resumes e-visa services, because initially the visa services were also stopped and all. But this is written, situation improves. तो article के हिसाब से कह रहा है कि perhaps we are actually improving it and all. India resumed e-visa services. Sources told The Hindu the move came 2 months after India suspended all visa facilities for Canadian citizenship in the wake of fraud triggered by. तो ये आपको पता होगा that Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, had said that that Indian agents were responsible for killing of 𝗟𝗲𝗴𝗪𝗔 Nijjar and all in British Columbia. See, British Columbia is actually a province in Canada. आप ये ना समझो कि ब्रिटेन में province in Canada. Province मतलब एक तरह का state है. So there is a state in Canada called as British Columbia. Okay, so just remember it. Just have an idea about it. So we have seen some sort of improvements here. Okay, yes, we'll be having on 25th November at 11 a.m. in the morning, we'll be having an all India open mock analysis. So do join it. That would be very, very beneficial for you. It will go both on YouTube as well as app. Then at 9 p.m, CLAT crash course 2024, we are running it every day at 9 p.m. You can join it. That would be very, very beneficial for you. The next one is we are providing this 2025 course. Those who are planning next year, you can go for it. Okay, this will be helpful for you in reaching to the destination. You can call on this number. And we are providing a 90% scholarship. So on 26th November, that is Constitution Day, isko kehte hain na, or earlier it was called as Law Day. So the date which is mentioned in preamble is 26th November 1949. Hai na? So on this occasion, we are conducting a scholarship test. Up to 90% scholarship we will be providing at 11 a.m. in the morning. If you qualify this test, you can get up to 90% scholarship on this course. Okay. Now, 2nd December ko 6 p.m. pe we'll be having a session 12 months to CLAT 2025 with Nivedita ma'am. So download our app, go to CLAT section, and there you can find this class. Okay. Yes. Now let's move on to the editorials. ये देखो, ये दोनों एडिटोरियल आई हैव टोल्ड यू दीस टू आर एक्चुअली ऑथरलेस. अगर आप एडिटोरियल में जाओगे पेज नंबर 6 में एडिटोरियल में, सो दीस टू आर एक्चुअली ऑथरलेस. ऑथर का नाम नहीं मेंशन होता है, कहने के मतलब द नेम ऑफ द ऑथर इज नॉट मेंशन. इट एक्चुअली मींस द एडिटर्स हैव रिटन द आर्टिकल, है ना, और इट रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन ऑफ द हिंदू एडिटर्स. दीज आर एक्चुअली, इसमें आर्टिकल देखो नाम भी लगा था, फोटो भी. सो दीस टू रिप्रेजेंट्स द ओपिनियन ऑफ द ऑथर कंसर्न, नॉट द ओपिनियन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. ठीक है. ओके. Let's talk about this. Listen to the people, not the numbers. So it has been written by Mr. Arun Myra. The Indian economy has an income problem, not a growth problem. Incomes are not growing sufficiently or sustainably for very large number of people, even though overall GDP growth is good. This is increasing pressure for reservation of jobs for economically weaker section, regardless of caste or religion. अब ये बता रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं है, इनकम प्रॉब्लम है. अगर ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है तो भी जॉब जनरेशन नहीं हो रहा है, जिसको समटाइम्स वी कॉल इट इज द वेरी फेमस टर्म कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ भी कई बार कहा जाता है. दैट द ग्रोथ इज हैपनिंग इन जीडीपी ग्रोथ इज हैपनिंग, ओके, बट द जॉब क्रिएशन इज नॉट प्रोपोर्शनल. वेरी लेस जॉब इज गेटिंग क्रिएटेड.
तो क्वेश्चन इज कि फिर जीडीपी ग्रोथ हो कैसे रहा है जब जॉब क्रिएशन इतना कम हो रहा है. So yes, that is what this is. Even though overall GDP is good, there is increasing pressure for reservation for all job of EWS. तो EWS वालों पर reservation का pressure ज़्यादा हो रहा है क्यों? Because yes, that 10% EWS reservation has been provided. So those actually, if people, this is मैंने 8 लाख का maximum ये. So if the people are earning less than 8 lakh, then there will be more pressure, है ना? More people want to get EWS reservation because they will fall in that category, है ना? Economists on both the sides for the government and those against it are debating whether the economy is creating enough jobs and are questioning the veracity of government's data. तो इकोनॉमिस्ट हैं जो चाहे गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो या अपोज करते हो, दोनों का जो डिबेट का मामला है. सो मेन दे आर डिबेटिंग इज whether jobs are getting created or not. So this is the main thing, because okay, even if we are having an increasing number of GDPs and all, whether that much job is getting created or not. Those against the government also want to show the problem of growth, but insufficient jobs have been created and all. ठीक है, ये सब बता रहे हैं. So main चीज is actually ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है. ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ इसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म है. And one of the reason perhaps cited is because of not that much or poor manufacturing growth. मैन्युफैक्चरिंग और अच्छे से होना चाहिए. ठीक है, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ. एक्चुअली ये मेन रीजन होता है, मतलब कई सारे रीजन में. अगर मैन्युफैक्चरिंग यानी मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाना है, वी हैव टू इंश्योर दैट इंडिया शुड बी टॉप क्लास एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज कंसर्न, है ना. तो इसको जब हम बढ़ाएंगे, सो व्हेनेवर वी विल फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सो द जॉब्स विल बी क्रिएटेड. ठीक है, सर्विस सेक्टर से उतना ज्यादा जॉब नहीं क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चरिंग को सक्सेसफुल बनाना है. सेकेंड थिंग होता है एमएसएमई, जो स्मॉल लेवल पर इंडस्ट्रीज, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज, ये बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करती है ना. दिस वी नीड टू फोकस ऑन. अनदर थिंग इज इंस्टेड ऑफ, देखो एक होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए. सो वी हैव टू फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री सेटअप किया जाए जिसमें जॉब क्रिएशन ज्यादा हो. सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म, देन वी हैव अपैरल्स, कपड़ा की इंडस्ट्री है ना, जूता चप्पल की, है ना. सो दीज आर द थिंग्स. लेदर इंडस्ट्री, व्हाट वी कॉल लेदर इंडस्ट्री. सो दीज विल क्रिएट मोर जॉब्स. ठीक है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, एमएसएमई, स्मॉल लेवल कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना. So then only we'll be able to create enough jobs. तो ठीक है, ये सब बात हो रही है. Then they are talking about US economy seems to be doing well according to its headline economic numbers and all. So these are the things US president even talked while strike. तब US की भी कुछ बात हो रही है, तो खैर इतना डिटेल नहीं जाना है. The overall problem of income in India according to the economists is that insufficient numbers have moved out of agriculture into manufacturing. हाँ, this has been historical pattern for sustainable growth in all countries including US and all. हाँ, अब देखो क्या अभी भी बहुत सारे केस में एग्रीकल्चर में से लोग मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, लेकिन और लोगों को जाना चाहिए. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी मेड मोर सक्सेसफुल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर विच शुडंट बी देयर. बिकॉज होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. हैव यू हर्ड दिस? एंड दिस इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत भी नहीं, लेकिन तो भी वो खेती कर रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई और जॉब नहीं है. So that is what we call it as disguised unemployment. What we call it as marginal productivity of these laborers are zero and all. Sir, इतने पास एग्जाम में अभी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या न्यूज से? देखो अगर अभी रिसेंट कुछ इवेंट हुआ तो अब तो प्रोबेबिलिटी कम है आने की. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो पहले से रिपीट हो रही है, अगर वो उससे रिलेटेड कुछ अभी आ रहा आर्टिकल, सो मे बी दे कैन आस्क. लेकिन अगर someone is asking, that's why I'm saying it. लेकिन अब मोस्ट लाइकली आई गेस कि अब तक क्वेश्चन बन गया होगा. ठीक है, यस. Okay, so that is what you should be knowing. This has been historical pattern for sustainable growth in all countries. ठीक है, that is what they are talking about. तो इसमें ये है basically they are talking about is agriculture में there are unnecessary many people working. ठीक है, which needs to be transferred to the manufacturing sector. So we have to make manufacturing sector a success, है ना. of youngness in need of our job. सर्विस सेक्टर में एक सर्टेन लेवल के बाद जॉब्स क्रिएशन नहीं हो सकता है ना. सो एक्चुअली मेन जो है हमको है ना, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ना, सर्विसेज लेबर इंटेंसिव, ऐसी इंडस्ट्री ओपन सक्सेसफुल बनाया जाए जैसे एमएसएमईज वगैरह होता है, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज. वी नीड टू मेक दैट सक्सेसफुल. द प्रॉब्लम इज दैट द जॉब्स दे हैव इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर आर नॉट गुड जॉब्स. हाँ, एक इशू है, गुड जॉब्स नहीं है. ठीक है, मतलब ये है कि नौकरी अगर है भी तो बहुत अच्छी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक ही कॉन्ट्रैक्चुअल है. The main issue is contractual. The next is salary is not very good, है ना.
कुछ स्किल डेवलपमेंट का कुछ फायदा मतलब नहीं होता ज्यादा, है ना. सो द जॉब कंडीशन इज नॉट वेरी गुड. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. Contractor workers are very paid less than regular workers. So these are the things. The world is at a turning point. New ideas of economics are required to create a more environmentally sustainable and socially harmonious future before it is too late. Statistics of growth and employment measure that we have used to think we should measure. New concepts of work are required and all. तो ये सब बता रहे हैं कि these are some of the issues and all. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. ठीक है. Whatever was required, we have discussed it. हाँ, informal workers बहुत ज्यादा हैं as compared to formal, है ना. So formalization of workforce is required, है ना. So these are some of the things you should be talking about, है ना. Okay. अब साइड में एक आर्टिकल थी Unheeded Advice. The time has come for governor's role to be reconsidered. Okay. Actually क्या है, I hope you are aware this has been very much in the news that Supreme Court has passed an order to the governor saying that if the governor sends back, if the Legislative Assembly sends back the bill again, then the governor cannot withhold the assent. It is supposed to pass it. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर हैज पावर टू विथहोल्ड एसेंट. विथहोल्ड एसेंट का मतलब होता है रिजेक्ट द बिल या सेंड बैक टू लेजिस्लेटिव असेंबली. ये रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट. और एक और होता है पॉकेट वीटो. हालांकि मेंशन नहीं है बट देयर इज नो टाइमलाइन मेंशन. सो बाय डिफॉल्ट वी बिलीव दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉकेट वीटो वेयर देयर इज नो टाइमलाइन. द गवर्नर विल नॉट डू एनीथिंग. ना ही वो वापस भेजेंगे, ना ही वो रिजेक्ट करेंगे, ना ही वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे. दैट्स पॉकेट वीटो. So what is happening कि अगर मान लीजिए if the legislative assembly passes the bill goes to the governor and the governor sends it back. legislative assembly ने governor को भेजा, governor ने वापस legislative assembly को भेजा. If the legislative assembly resends it by passing it, then governor is supposed to sign and cannot withhold. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि 200 की रोशनी में अगर हम देखें इस आर्टिकल की लाइट में, so we'll understand it that yes, governor in the second time cannot withhold. So these are the things you should be knowing it. Now there's a question for it. ये काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा था, तो हो सकता है इस बार भी 2024 में पूछ दें, इसलिए कि पहले से चला आ रहा है ये न्यूज. ठीक है. It is coming in the news for the past 15-20 days or maybe 1 month, and that is why maybe even this year this question can be asked. ठीक है. Which of the following bill cannot be returned by the governor if the legislative assembly and legislative council as well if there is in the state passes it? मतलब अगर बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का गवर्नर के पास गया तो एक केस में गवर्नर वापस नहीं भेज सकते हैं. वो कौन सा बिल है? मैंने बताया है कई बार. आई हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट 1 week a lot of times. Yes, गरिमा चौधरी राइट. B is the right answer. मनी बिल is the right answer to this question. Yes. तो एक चीज ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल तो वापस भेज सकते हैं गवर्नर, लेकिन मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं. ठीक है. तो चाहे तो रिजेक्ट कर दे मनी बिल को, है ना, या साइन कर दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे कैन नॉट सेंड इट बैक, है ना. मनी बिल को ये नहीं कर सकते, है ना. दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो होगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज डन ओनली एट सेंट्रल लेवल. पार्लियामेंट पासेस द बिल. यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तो कोई लेना देना ही नहीं है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट डन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज डन बाय द पार्लियामेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का तो यहाँ पे कोई बात भी नहीं उठता है ना. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. द स्टेट लेवल गवर्नर की बात कर रहे हैं ना. सो बी इज द राइट आंसर. दीज आर द थिंग्स, है ना. The tenor of Constitutional Assembly indicates that it intended to make the power of granting withholding assent on exercise solely on the advice of Council of Minister. तो बोले कि ऐसा लगता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जब बिल पास करती थी तो जो गवर्नर का जो डिसीजन होता था वो उनका खुद का डिस्क्रिप्शन नहीं है. आइडियली इट इज शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस. ठीक है. इन्हें खुद का डिस्क्रिप्शन नहीं ऐसा लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से ऐसा लगता है. ओके. बिकॉज ऑफ कोर्स because the elected government comes from legislative assembly. These are elected people, है ना. The people are called as MLAs, member of legislative assembly. Okay, and governor is an appointed one. So of course, in a democracy, the one who is elected should have more power for all practical purpose, है ना. So these are the things talked about. It must be clarified that withholding the assent is a final rejection of the bill, है ना. कारण कि withholding assent मतलब reject the bill, है ना. So that is what it is, है ना. So these are the things being talked about. ठीक है. The aid and advice clause, that is the core parliamentary. हाँ देखो अब हर जगह पढ़ोगे ना, जितना भी आर्टिकल 75, 76 पढ़ोगे, सेंट्रल लेवल के लिए 163, 164 पढ़ोगे. So this word is mentioned, aid and advice. The governor is supposed to work in aid and advice of council of ministers, with some exception, but mostly in aid and advice. यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे उसी पर गवर्नर को जनरली काम करना चाहिए. किसी कुछ केसेस में डिस्क्रिप्शन है, देयर आर सम डिस्क्रिप्शंस, however, but most of the cases the governor is supposed to work according to the aid and advice of council of ministers. You will find these terms mentioned 163, 164 आर्टिकल, ये सब पढ़ना वहां मिल जाएगा. सिमिलरली प्रेसिडेंट के लेवल पर आपको 74, 75 ये सब पढ़ोगे ना.
So here you will find this article 74, 75 and all. Okay, the next is this article reporting animal cruelty makes children safer and all. Now, basically they are actually connecting animal cruelty with child abuse. वो कह रहे हैं कि दोनों बहुत सिमिलर है and that is what they are talking about. Child abuse is a grave and rampant in India. Union Ministry of Women Child Development published the largest empirical study about the incidence of child abuse in India. Okay, so both male and female, both child actually is actually, a lot of them are actually the victim of that. And for that we have a law. तो ये याद रखिएगा, कई बार न्यूज में आता है, what we call it as POCSO. So this POCSO Act is actually to punish those who actually are involved in harassing the children and all. So these are some of the things you should be knowing about it. I hope you are aware. So the link between animal cruelty and human violence first came in 1751. So वो link कर रहे हैं history में जाके कि animal cruelty को human violence से कैसे link किया गया. अच्छा, animal cruelty के लिए there is a law, है ना, PCA 1961 है, Prevention of Cruelty to Animals Act, है ना, 1960s में या 61 का है. इससे resulted there is a board called as Animal Welfare Board, which is a statutory body, है ना. Okay. Now एक चीज आप बताओ, recently there has been a judgment of Supreme Court regarding Jallikattu and Kambala. आपको पता है ये? What is that? Recently क्या कुछ months पहले, तो ये 2024 में पूछ सकते हैं, because this is I think few months back this was in the news, the judgment of Supreme Court regarding Jallikattu and Kambala. What is that? कोई बता सकता है? So Jallikattu is sports, I think very similar to bullfighting, like we have, you must have heard in Spain there is bullfighting. Similar to that, in Jallikattu there is a sports which is famous in Tamil Nadu. Kambala is famous in Karnataka. So these two were challenged in the Supreme Court, saying that it will violate the animal cruelty idea and all. It is against the human animal cruelty and all. However, the Supreme Court allowed it and all. I mean, it did not ban it. है ना? आपने सुना होगा, you must have heard it. हाँ, Animal Welfare Board versus Union of India. Very good, Karima Chaudhary. हाँ. So these are the things you should be knowing it. ठीक है, तो यही सब animal welfare से related है ना. Then they are talking linking animal cruelty with child abuse. There's a need to investigate it further in the Indian context, है ना. Okay. National Crime Records Bureau का लोग कुछ डेटा वगैरह बता देखो ना. Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, they are quoting it and all, है ना. Poor enforcement of anti-cruelty laws therefore should not only harm animals but also human violence and all. अब देखो, enforcement of law is सबसे most important. जैसे हम लोग कहते हैं कि law बना दिया, so law, making the law is not enough. ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं खाली law बना दिया हो गया, that's good, because there are a lot of laws. There is a law for murder also. If someone does murders, he or she will be jailed, and there are laws for that, but still murders happen in India. So important है implementation, है ना, that's more important. Okay, implementation means we have adequate number of police force, adequate number of judiciary. The judicial delays should not be there. ऐसा नहीं केस चल रहा है तो 10-10 साल से केस चल रहा है. So we have to ensure that the fast criminal justice system should be there, है ना. The judgment should come as soon as possible. There should not be shortage of judges and police force, policemen and all. And these are some of the ideas about it. Okay, yes. The next one is Glimmer of Hope. A pause in war after the hostage release deal gives peace a chance. So we have, I hope you are aware, there have been recent news of some sort of truce. Truce मतलब मैंने बताया था, truce is means a sort of negotiations कह सकते हो, या negotiation और हाँ between fighting parties, है ना. कुछ negotiation हुआ ताकि मतलब to stop the war and all, right? So 2.3 million people humanitarian relief for Gaza Strip after October 7 attacks and all. So these are the things they are talking about. So when 7th October attack happened, it is said that almost 1,200 people died. However, when actually the Gaza became, after that Israel attacked Gaza, 30,000 Palestinians have died and all, which is a very large number and all. And vast of them are women and children. So that is what they are saying, that if the truce, if the war is getting stopped, it is a good thing and all. So that is what you should be knowing about it. Okay. So I hope you are aware, Al-Shifa Hospital of Gaza has been very much in the news. It has got affected because of violence and all. Okay.
more than a week, the Israelis yet to support any, give any credible evidence to back this claim that Hamas command center is there in the hospital. So मतलब वही बता रहे हैं कि they have not given enough evidence to show that yes, there is that hospital, I mean Hamas command center is there. That is what the author is writing. Okay, so यही सब चीजें. So we hope that the war will get stopped and all. फिर hostage का deal हुआ है. I hope you are aware the hostage. Okay, they'll be exchanging the hostages and all, and now some deal will happen and all. That's there. Okay, the next one is same-sex couples judges to the rescue. A judge to the rescue. Actually, एक recently judgment आया सुप्रीयो केस के बाद. There was a judgment of a Madras High Court. And he said that deed of familial association needs to be set up. So he gave some idea of allowing the marriage and all. However, in Supriyo case recently, the Supreme Court has not allowed. Supreme Court said that fundamental right to marry, there is no fundamental right to marry in case of actually the same-sex marriage and all, and our homosexual marriages. तो ये सुप्रियो केस या सुप्रिया चक्रवर्ती केस, दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज. इससे सवाल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी. देयर विल बी वन क्वेश्चन आइदर इन क्लैट और एलेट. ओके, this is a question. Please read it carefully and then answer it. Which of the following is not related with LGBT community directly? Directly related नहीं है. Anyone? What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग ओनली 8 लाइक्स, 15 इज वाचिंग. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन, यस. ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है कि बिकॉज ये चारों केस उसी से रिलेटेड है. ठीक है, सो दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. दिस एक्चुअली लीगलाइज अडल्ट्री, जिसको अभी ओवरटर्न करने की बात हो रही है ना. So this also you should be knowing it. All these four are related with LGBT community, and I have told you all कि ये चारों पढ़िएगा. Let me tell you about these. देखो, सबसे पहले जो जजमेंट था वो है ये वाला था, नास फाउंडेशन केस. द फर्स्ट जजमेंट, इसका आंसर ये है. द फर्स्ट जजमेंट वाज ऑफ नास फाउंडेशन केस. द दिल्ली हाई कोर्ट struck down 377. मतलब it decriminalized homosexuality. Okay, then the matter was appealed in Supreme Court. That's called as Suresh Kumar versus Nas Foundation case. This one. And Supreme Court, two judgments said it restored Article 377. Okay, लिखा ना है देखो. The Supreme Court consisting of these two judges overturned the Delhi High Court order. Decided to revisit the judgment order. है ना? So actually it overturned the Delhi High Court order of Nas Foundation case, and Suresh Kumar case, Kaushal case. Article 377 was in a way restored. Means homosexuality was again criminalized. Then in 2018, in Navtesh Singh Johar case, again the Supreme Court, the 5 judgments, the larger bench overturned it again, its own previous judgment, and in Article 377 was again decriminalized, struck down in the sense that it was decriminalized, homosexuality was decriminalized. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. This is NALSA is especially related to transgender community, so it was recognized as third gender in NALSA case. ये चारों केस पता होना चाहिए. All four are very 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 important. Star market even for this year. Those who are attempting this year or those who are attempting next year, दोनों के लिए. This is very 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 important. So do not say कि सर आपने पढ़ाया नहीं था. Not related with LGBT community is this, but you are supposed to read all these four. ठीक है? Is it clear? Yes or no? Okay. Now let's move on. Reason behind the rise in Indian Railway AC coaches. I have told you that yes, we are witnessing the rise of AC coaches in railways and all. We had discussed it yesterday and all. Okay, ठीक है. और ये ऑपरेशनल रेशियो जो है वो राइज कर रहा है. सो राइजिंग ऑफ ऑपरेशनल रेशियो इज कंसिडर्ड एज बैड. उतना अच्छा नहीं माना था, बिकॉज जितना ज्यादा ऑपरेशनल रेशियो है उतना मतलब एफिशिएंसी इज बैड, इट इज कंसिडर्ड. ठीक है ना. तो जैसे ऐसे डिफाइन करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल ना. So these are the things and all talking about. Rise in the value of operating ratio is indicative of the decline in efficiency. तो अगर ऑपरेशन रेशियो ज्यादा हो रहा है तो एफिशिएंसी गिर रही है, इसका मतलब. ओके, हाउएवर 107 जो है 2021-22 के यहाँ शो कर रहे हैं ना. बट रिसेंटली वी हैव सीन इन पीआईबी डेटा, और पीआईबी के 21 जुलाई के डेटा के हिसाब से 107 से फिर नीचे गया है 98.1. ठीक है, सो ये ऑपोजिट काम करता है ना. आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देयर हैज बीन एन हेल्दी इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो. हेल्दी इंप्रूवमेंट लिख रहे हैं ना, इसका अगर परसेंटेज नीचे जा रहा है सो इट्स कंसिडर्ड एज हेल्दी. We are talking about operational ratio or operating ratio. So the lesser the operating ratio is, the better it is. Okay, is it clear?
Now, Haryana's employment reservation law, we have discussed about this as well, है ना? That Haryana, Punjab and Haryana High Court struck down the 75% reservation provided in private jobs, those whose salary is less than 30,000. जिसमें 30,000 से कम salary उस केस में. Okay, so this was passed and all. Okay, so the local candidate will get benefit and all from that. However, it was challenged on the ground of violating Article 14 equality before law. ठीक है. Similarly, Article 19 talking about what? Freedom of speech and expression. Then move freely throughout the territory of India. So this will get affected. And practice any profession, carry on any trade or occupation. So the High Court has said that Article 14 and 19 is getting violated also. That is why we are striking it down. ठीक है. ठीक है. Article 15 को भी violate करता है ना? So these are the things you should be knowing it. Now, another one, how did the state defend it in the court? अदालत में state ने क्या कहा? So state used Article 16 clause 4. जिसे कहा ना 16 clause 4, which is actually especially nothing in this article shall prevent states from making any special provision for reservation for backward class of citizens in the opinion of state. So उन्होंने कहा कि we are making it for backward class of people, है ना? So less than 30,000 salary. So they defended it by saying that we are actually reserving it for those who are actually earning less than 30,000. So they defended it by Article 16 clause 4. यही defense actually OBC SC ST reservation का. Article 16 clause 4. We have taught this in paid classes. I still remember. तो यही दलील वो बता रहे, ठीक है? Which stipulates the right to equality in public employment and all. ठीक है? Okay. The next one is Constituent Assembly of India adopted Constitution on 26 November. देखो ये very very important है. ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड है ना 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था. दिस डेट इज मेंशन इन प्रीएम्बल. ठीक है. सो देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस कि ओनली फीमेल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे. ठीक है. जैसे चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना? BR अंबेडकर. सो ड्राफ्टिंग कमेटी के फीमेल मेंबर कौन थे फाइंड आउट करना. और हु वाज द ओरिजिनल कैलीग्राफर, किसने लिखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल किताब है उसमें जो डिजाइनिंग वगैरह किए गए किसने किया है, उस आदमी का नाम बताना है. सो गो एंड फाइंड आउट एंड आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन नीचे आफ्टर द क्लास इज ओवर. व्हिच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नेशनल एक्वाटिक एनिमल किसको डिक्लेयर किया गया? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड? कितने लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, है ना? 22 लैंग्वेज है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये भी मैंने पढ़ाया है फर्स्ट क्लास में, मैं ये पढ़ाता हूँ. I teach this in the first class of our paid class. इसको ही find out करना और आंसर लिखना. According to Indian Constitution, what is the minimum age required to become Prime Minister of India? PM बनने के लिए minimum age कितना चाहिए? So these are very basic questions. After the class is over, ऐसे question 1 करके आंसर 2, 3, 4 करके आंसर लिखेगा. After the class is over, okay? Because these are basic questions, so ये सब directly exam में भी पूछे जाते हैं. ठीक है? So you should be knowing it. Okay. Central ट्रेड यूनियन कॉल फॉर प्रोब इन टनल कोलैप्स. तो जो टनल कोलैप्स किया उस पर ना डिमांड हो रही है कि प्रोब होना चाहिए, कि मतलब एक तरह से जांच होनी चाहिए. इंक्वायरी हैज टू बी डन, है ना? यस, MN रॉय है इसका आंसर. गुड. हाँ, वेरी गुड. हाँ, सारे का आंसर लिखिएगा क्लास ओवर होने के बाद नीचे कमेंट में. सुप्रीम कोर्ट बिगिंस हियरिंग ऑन प्लीज अगेंस्ट पार्टीज ऑफरिंग फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शन. अब देखो फ्रीबीज का काफी बात होता है and the criticism of freebies comes from corrupt practices or from section 123 of Representation of People's Act. देखो दो बात है. फ्रीबीज का एक ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट है, एक फेवर में, एक प्रो है, प्रो आर्ग्यूमेंट है, एक अगेंस्ट में. सो अगेंस्ट वाले कहते हैं कि ये ब्राइबरी के लिए प्रॉमिस है. 123 talks about corrupt practices. So if someone is doing a corrupt practices, he or she will be disqualified. He or she cannot fight election. अगर कोई corrupt practices में इन्वॉल्व है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. तो जैसे ब्राइबरी को भी करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन किया गया 123 सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. जैसे अगर कोई प्रॉमिस करे कि हम आपको गिफ्ट देंगे इलेक्शन अगर हम जीत गए तो ऐसा समथिंग लाइक दैट, है ना? सो दिस माइट बी कंसिडर्ड एज दिस. तो जो अगेंस्ट में फ्रीबीज के, दोज हु आर अगेंस्ट फ्रीबीज, दे से दैट इट इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस. लेकिन जो फेवर में वो कहते हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी प्रोवाइडेड. फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन. अगर कोई बंदा गरीब है, सो ही और शी कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर हिज और हर चिल्ड्रन. सो फॉर दैट द गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू प्रोवाइड इट फॉर फ्री बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट एंड नाउ अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल A it is. Similarly, Supreme Court said right to health is also a fundamental right.
So if a person is not able to pay the bills of, let's say, hospital, then a government is supposed to come and help him or her by providing government hospitals. आपने देखा हो government hospitals में फीस बहुत कम होता है, very less fees. आपने देखा है? इनफैक्ट बहुत सारी मेडिसिन भी फ्री होती है ना? बहुत सारे स्टेट्स में you will find medicine at very cheaper rate or maybe ₹0. The fees is very less. कोई डॉक्टर्स की कोई फीस नहीं होती because the government provides the salaries and all. I hope you are aware of that, है ना? So ये उससे आता है. तो अब इसमें डिबेट चलता है कि अब उसको डिफाइन कहाँ से किया जाए. How can we differentiate between necessity and freebie? एक बाउंड्री क्रिएट किया जाना चाहिए, है ना? ये क्या चीज नेसेसिटी में आ रही है, क्या चीज एक्स्ट्रा है फ्रीबी में आती है, विच नीड्स टू बी स्टॉप्ड और बैंड. सो दीज आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. ये काफी दिन से आर्ग्यूमेंट चल रहा था. सो अब ये हियरिंग हो रही है. अब देखो क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है. लेट्स वेट फॉर दैट. ओके, इजराइल हमास एग्री टू 4 days ceasefire. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, है ना? ट्रूस की बात हुई है. सो दैट इज व्हाट वाज इट वाज इन द न्यूज एंड ऑल. ये भी न्यूज में था. ओपन एआई सीईओ, देखो आजकल ना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सवाल आ रहा है ना? सो ऑल्टमैन, है ना, ये सैम ऑल्टमैन वाज फायर्ड एंड ऑल. चैट जीपीटी के मेकर जो है ओपन एआई, है ना, चैट जीपीटी मेकर. सो ही वाज फायर्ड बट लेटर ऑन ही वाज कॉल्ड बैक, वापस बुला लिए गए, है ना? सो गो एंड रीड समथिंग अबाउट ओपन एआई. इसमें देखो ये लोग शामिल हैं. सो दीज आर द पीपल इन्वॉल्व. इवन एलॉन मस्क, यू विल फाइंड इट देयर. ठीक है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स में से. ठीक है, ये सब दीज आर द थिंग्स. जीपीटी 1 2 3 4, चैट जीपीटी, DALL-E, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. ओपन एआई 5, ओपन एआई कोडेक्स. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, है ना, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. Okay, the product of OpenAI. Okay, so this is all about today's class. Today at 6 p.m. guys, on our app, download our app, go to CLAT section. Go to CLAT section. Today we'll be having a session. The session will be about what? So the session will be about how to make notes from newspaper. From newspaper. Okay. So those who are attempting next year, 2025 वालों के लिए, we are having this course. ठीक है. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.